start a new session for the analysis of the financial statement. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थ्री थिंग्स आते हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम लोग इनकम स्टेटमेंट समझेंगे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इट्स कम इन टू द two parts, okay, two three parts. So it's coming to like that, okay. So start with the income statement. So income statement एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं। इट्स काइंड ऑफ, इसे हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एंड इन दैट वी आर शोइंग द कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस, everything related to the finances, or we it's prepared in a specific period of time or in a fiscal year. सो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सो इट्स फर्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू सेल्स, द टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। लाइक अगर हम कोई भी चीज़ और कोई भी गुड्स को सेल करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसको रेवेन्यू बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओवरऑल कॉस्ट वी आर लाइक cost which is producing associated with good and services, it is known as the COGS. ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज अ रेवेन्यू माइनस सीओजीएस। जब हम रेवेन्यू में से सीओजीएस माइनस करते हैं वो बताता है इनिशियल प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट रिलेटेड टू द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज। जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ओके। ऑपरेटिंग इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंडिकेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम core operation. जो it's like a core operation. If we are giving service to the customer, then we are generating money from that service only. It is known as the operating income. Non-operating income, it's additional income or expense not directly related to the core business. ये हमारे core business से relate नहीं करता है। Like if we are talking about the Jio only, like having a telecom company, and their business only related to the telecoms tower, having a recharge or like that. But if Jio company is invested in some kind of stock derivatives, doing trading, so ये उनका रोज का काम नहीं है, ये वो कभी कभी करते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट। वहां से कुछ पैसा आया तो वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट इनकम, ये तो ओवरऑल लाइक प्रॉफिट और लॉस, ये फाइनल रिजल्ट होता है इन इनकम स्टेटमेंट, और इंडिकेटिंग द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस आफ्टर ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस। सो एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, हम एनालिसिस क्यों करते हैं इनकम स्टेटमेंट की? बिकॉज ऑफ टू इवेलुएट कंपनी, इसके लिए हम लोग यूज़ किया जाता है। सो इसमें सेवरल ऑफ द रेशियो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट रेशियो है प्रॉफिट मार्जिन। सो इट्स परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट रिमेन एज नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। ये हम लोग को प्रोवाइड करता है कंपनी का इंसाइट, लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। सो इसका फार्मूला है नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू इंटू 100। ग्रॉस मार्जिन सेकेंड है, ये रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ सेल रेवेन्यू रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये रिप्रेजेंट करता है सेल्स परसेंटेज का रेवेन्यू के टर्म्स में, हम जब उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिडक्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100। ऑपरेटिंग मार्जिन shows the profitability of core business operation before interest and taxes। ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है फ्रॉम आवर कोर बिजनेसेस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। The formula is here: operating income upon revenue into 100. EBITDA. EBITDA is it means earning before interest, tax, and depreciation and amortization. It's helped to evaluate a company profitability and operating efficiency by measuring the percentage of revenue by EBITDA. EBITDA formula is EBITDA upon revenue into 100. Revenue growth rate. So it's a help in measure the percentage change in revenue over a period of time to assess a company ability to generate more sales। कंपनी कितना और सेल्स जनरेट कर सकती है ओवरऑल इन अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वो बताता है रेवेन्यू ग्रोथ रेट। द फार्मूला इज हियर रिटर्न ऑन इक्विटी। इट्स मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। और नेट इनकम जनरेटेड पर यूनिट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी,
यानी एक इक्विटी पे कितना नेट इनकम जनरेट हुआ है उसको बताता है. द फॉर्मूला इज नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी into 100. ROA, it means the profitability of a company asset by measuring the net income generated per unit of total asset. Per unit of total asset पे कितना net income generated by the company है ये बताता है. ओके, द फॉर्मूला इज हियर. Interpreting an income statement. So income statement ke there are two things in the income statement. First is the positive net income and second is the negative net income. When the company is doing good, like having a profitable income, earning of the period is very good, then it's known as the positive net income. When companies incurred losses or doing losses in their financial year, then the in obviously income statement is negative. Trend is something like that. On Instagram always coming a trends like that, you can uh, get it. And yeah, analyze the trend over multiple period to access the company financial health. So trend analyze करने से financial health of the company भी पता चलता है. Comparison, compare the income statement with those of competitor or industry standard for benchmarking. यानी अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें, if we are talking about the like automobile sector like a Tata Motors, so Tata Motors का competitor कौन है? There is a Mahindra and Mahindra for the competitor. If we are going through the income statement of the Tata Motors, then we are also going to see the uh, another company like the Mahindra and Mahindra income statement for the comparison. Importance of the income statement. So income statement help investor insight. Yeah, it's a help to the make a financial decision and inform about the financial health of the company. Management tools, yeah, it's also help to the management for the planning, financial planning, resource allocation, and decision making to the managements. Credit worthiness, yeah, if a company going to somewhere for the taking a loan to the bank or launching their IPO on a financial market, then obviously people want to see the credit worthiness of the company, if a company payable their money or not in the future. So that kind of things help to understand by the income statement. Strategic planning. Income statement inform long-term strategies by identify financial trend and guiding growth plan. It's also have a strategic planning by the income statement. We can plan to the future, what where we can allocate the money. Legal compliance. Business must maintain accurate in statement. Yeah, we can hope from the business because the financial regulation and accounting standard are help to make the legal compliance better. Transparency and trust. Transparent income statement build trust with a stakeholder, fostering a positive corporate reputation. Benchmarking. Comparing income statement to industry standard and competitor help companies access their performance and make improvement. Yeah, benchmarking help performance and make improvements. So it is for today, guys. If you like that video, then like and subscribe the also. And if you want like video, then comment it, and we will make that kind of video for you. If you are from a commerce background and doing a financial modeling kind of things, then it video will helpful, and this session will helpful for you. So thank you for watching. We will see you in next one.